Ji. Uh, Bismillah Rahman Rahim. Today we will having our first session. That is regarding the our course, which is distributed database systems. Uh, of course, this course is connected with your previous course and the previous course which you have done in your third year, maybe, that is database systems. That is a prerequisite for this course. And during this course, we will cover the following topics which you can see on your screen. The teaching mode will be both online as well as on campus. So let's say we are taking this class right now by Zoom. So next time I'll try to take that class in the department. Uh, so the outline, according to the outline, we have to cover the introduction part, the background. Introduction is important because we are talking about distributed systems. So what distributed systems are and why there is a need of distributed systems, we'll discuss. The background, of course, background is important because background is connected to what you will do in the next chapters. Then we will talk about the database design, how we can have this design, because we did database design when we were doing our first course, but that was not distributed. So in the case of distributed environment, what strategies are there for design, what factors you have to consider while you are going into the design. Then we'll talk about integration, database integration, uh, the semantic data control, distributed query processing, and of course we will see that how far we can go during our lectures. So we will do our best to cover all the relevant topics. Maybe some topics we will cover in very detail and some topics we will not cover in detail. So we will go with our schedule, with our time, and we'll see that how we can manage it. There is a lot of importance of this course because we are talking about database applications, or we are talking about distributed database applications. Uh, that has a very important significance while we are talking about implementation of information systems, or designing database systems for enterprises. There we have to decide whether we go for the distributed environment, or maybe the distributed environment is not required. So when I say distributed database systems, so there are two important concepts which comes in our mind. That is, number one, basically is the database technology, of course, because the overall the database concepts and database models and database ontology is all relevant while we talk about distributed data systems. It will not change. uh, so we learned about various aspects of databases, that how we construct a database, how we gather requirements for the databases, how we can model it, how we can make the conceptual model, what architecture is required, how there are many architectures which are there for implementing a database system. Then you talked about the database models, for example, the relational model, object-oriented models, and other models as well. So all normalization, query processing, query optimization, transaction management, all these things are, of course, are relevant when we talk about distributed environment, because only the environment is changing, only the architecture is changing, but overall the concept of the databases will remain the same. So while we're talking about distributed database systems, database technology, integration is there. And here we are talking about integration, not we are not talking about centralization or something else, because we have to integrate various database systems which are there, maybe various database servers which will be there to be connected with this system. And the second is we talk about computer network.
Computer networks is why relevant, because here we're talking about distribution. So let's assume that you are working in an environment where the data servers are being located on various sites. So the computer networks plays a very vital role, that how you will think about the network strategy, what type of networks are suitable for implementing distributed database systems. So the knowledge of computer networks is also very important, because that is that all counts when we talk about distribution. So I think both the courses you have done already in your previous semesters. So that knowledge is very important. And basically, what we are doing is that we are integrating it into the distributed environment. So जितनी ज़्यादा बेहतर इंटीग्रेशन होगी उतने अच्छा बेहतर रिजल्ट आएगा. जितना अच्छा मॉडल इवॉल्व होगा उतना बेहतर आपका जो है ना इम्प्लीमेंटेशन होगी. तो जितना इम्पोर्टेंट जितना बेहतर आपका नेटवर्क ऑर्गेनाइज होगा, क्योंकि बिकॉज at the end of the day all that traffic moves on the network. So if network is not appropriate for your implementation, then you will not get the full fruits of your output or your implementation. So that is the motivation for us for this particular course. So we'll move forward further. We talk about distributed environment now. Okay, let's explore further what is meant by distribution. uh, One of the definition is I'll not only rely on this definition. There are many other definitions of distributed computing. In your own words, you can explain it. But let's suppose, for the sake of the course, I'll take this definition, that number of autonomous processing elements. And it is mentioned that it is not necessarily homogeneous. While when I say homogeneous, it means similar processing elements. And when I say heterogeneous, it means it is not necessary that all those autonomous processing elements are similar. They might be different. Maybe you are talking about two different types of databases, and you want to integrate them. So that is also possible. So number of autonomous, when I say autonomous, it means the processing of that particular element is there at that particular end, and there is very less you can say uh, connections with other elements in terms of processing, uh, means you can say relying on the other elements, so that are interconnected by a computer network and that cooperate in performing their assigned task. So very simple definition, that number of autonomous processing elements. क्या कहता है कि भाई बहुत सारे प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं, जरूरी नहीं होमोजीनियस हो, वो आपस में कनेक्टेड भी हैं. किस तरह से कनेक्टेड है? एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, और जितने भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें वो कॉपरेट कर रहे हैं. कॉपरेट मीन्स कि वो आपस में, इसका मतलब है इंटीग्रेटेड है. अगर वो इंटीग्रेटेड नहीं होंगे तो फिर वो कॉपरेट नहीं कर सकते. ठीक है, अगर वो इंटीग्रेटेड होंगे तभी वो कॉपरेट कर सकते हैं. So there are lots of things which comes in our mind, that what needs to be distributed. So when you talk about computing, there are four possibilities that you think of while you discuss the distributed environment. It may be the processing logic, it may be a function, it may be a data, it may be a control. So distribution किस चीज की करना चाहते हैं? क्या वो जो एप्लीकेशन itself है, जो उसकी प्रोसेसिंग की लॉजिक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि कुछ टास्क यहाँ पे प्रोसेस होंगे, कुछ टास्क यहाँ पे प्रोसेस होंगे, कुछ साइड 2 पे होंगे, कुछ साइड 3 पे होंगे, कुछ साइड 1 पे होंगे. तो अगर आप लॉजिक के पर्सपेक्टिव से, एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से उसको करना चाहते हैं, then it is based on processing logic. Or the other way is, maybe you decide that you determine all those functions which needs to be executed, and what you did is that you distribute the functions. Let's say you say that these functions will be performed at site 1, these functions will be performed at site 2, and similarly these functions are provided are executed at site 3. So
either you can think about functions, distributing functions. Then the third important thing is that instead of logic or instead of functions, you may distribute the data. Let's suppose you have the database, and then you have decided that that data is relevant for site 1, that data is relevant for site 2, and that data is relevant for site 3. So let's break the data into 3, and we might have 3 various data components or databases running at 3 different sites. And remember, by the definition, that it needs to be integrated. And last is controls. So either you can think of controls, that what controls you want to distribute. So what site A can do, what site B can do, what site 3 can do. So you can determine the various controls and then make the hierarchy of the controls and distribute it accordingly. So it means that when we talk about distributed computing, all possibilities are there. So I will move forward. Now here we are talking about distributed database system. A distributed database system, when I say, it means that it is a collection of multiple logically interrelated databases distributed over a computer network. So it's a very simple and clear definition that a distributed database is what is a collection of, number one, multiple. It means, of course, because we are talking about distribution. So when we are talking about distribution, so it definitely, it would not be single application or single database. So it is multiple. So at least अगर मैं distributed environment में जाऊंगा तो at least दो तो होगी, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं. Number comma, logically interrelated databases. But how many? Let's suppose there are 3, there are 4 various databases. So all those four or 3 or 5 must be logically interrelated. Means they integrate with each other. They are integrated with each other. So it is not like they have no relationship with the other database. So if this will be the case, then you will not take the full advantage of the distributed database. So in distributed database, it has to be logically interrelated databases. And what it is distributed over a computer network. Of course, we are talking about implementing such systems. So such systems are also only implemented by using computer networks. So what will be the network topology? What will be the strategy which you will use for implementing such systems? How you determine the where those servers have to be located, how they will be connected, what type of network you are using, what type of network traffic you have. So all these questions become relevant while we are implementing such systems. So the distributed database management system is what? Then it is called a software that manages the DDB and provides an access mechanism that makes this distribution transparent to the users. So now, जैसे आप लोगों ने पुराना कोर्स, अपना पहला कोर्स पढ़ा था, तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि जी डेटाबेस सिस्टम्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड टू हैव अ DBMS. So हम DBMS की बात कर रहे थे. So in DBMS, what is DBMS? DBMS is basically a complete software that provides you all that access mechanism. कौन सा access mechanism? Let's suppose you can make a query, you can see the data, you can enter the data, you might have the forms, you can process the data, you can update the data. So various functions you may use by using your database management system software. So here we are, because we are talking about the distributed environment, in that case, that DBMS is said to be DDBMS. Which is the software that manages the DDB and provides an access mechanism. What is meant by an access mechanism? Access mechanism means that how users access the data. Let's say how user make request to the database, what interface they will be provided and how that data will be accessed. Basically, that means an access mechanism. Let's suppose we talk about
a distribution firm. So a distribution firm, the users want to access the data, they want to see distribution किस तरह से हो रही है, कहाँ कहाँ distribution हो रही है, कौन कौन सी places पे send किया जा चुका है, मुख्तलिफ data they want to observe. तो access mechanism तमाम लोगों को मिलना चाहिए, तमाम users को मिलना चाहिए. That makes this distribution transparent to the users. Transparent is very important to understand. What is meant by transparency? Although it's a big topic, transparency, but later we will discuss in detail. But in short, transparent means the users, because the users do not have any idea that the application is distributed or we are using the distributed environment. यूजर्स उसी तरह से एक्सेस करेंगे डेटा को, आम यूजर्स जैसे वो किसी एक सिंपल डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं या एक सिंपल तरीके से किसी क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन में वो डेटा को एक्सेस करते हैं. उनको उनके लिए हमें क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है. अगर तो हमने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी तो इसका तो मतलब ये हो गया कि फिर हम यूजर से ये कह रहे हैं कि तुम्हें अगर एक साइट पे जाना है तो पहले तुम उस साइट के सर्वर पे जाओ, वहां से डेटा को उठाओ, फिर तुम दूसरे साइट को एक्सेस करो, वहां से डेटा को उठाओ, दोनों को फिर आप जो है ना कंबाइन करो, फिर उसको फिल्टर करो, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो फिर तो इसका मतलब है अगर मैं ये काम करता हूँ, इसका मतलब है कि फिर तो इस एप्लीकेशन का कोई एडवांटेज ही नहीं है. जब हम इस एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी आती है. ट्रांसपेरेंसी ऑफ वेरियस काइंड. Transparency is network transparency as well, because the user has no idea of how the network is being implemented. The transparency may be on the design side, because users do not have any idea that how that database is designed, what data is being distributed. So distributed database system is equivalent to two things. Number one, the DDB. Of course, when I say DDB, it means a collection of multiple logically interrelated databases distributed over a complex network. And when I say transparent and providing a proper access mechanism, then it's a software. So the system itself is a combination of the database and as well as the distributed database systems. In the previous slide, we were discussing about the four possibilities, that is of distribution, that is processing logic, function, data, and control. So remember, in this course, and normally the data is being used for that purpose, for distribution purpose. So when we say what is distributed, actually we'll go for the data rather than function, rather than processing logic, and rather than control. The reason is that user needs to access the data. So we need to divide the data, or we need to break the data in such a manner that we can increase the efficiency in the system, and we can design such a model where user can have a clear accessibility to the system. So remember, in all these chapters and in the following chapters, we will talk about data distribution. So that slide we already discussed. What is not a DDBMS or DDBS? Because when I talk about distributed, so there are other possibilities as well that these distributed environments of various kinds, which we have discussed in various courses. For example, we talk about time sharing system. So time sharing system actually is not a DDBMS. So let's suppose you make such an application by using any virtual environment, and you come out with a system where you have applied a time sharing mechanism or time sharing systems, then remember that will not be qualified as a DDBMS. Number two, a loosely or tightly coupled microprocessor system means sharing of microprocessors, or if you are using multiple microprocessor and various users are using the resources which are there in terms of processing, it is also not included in DDBS or distributed database environment. Although you can do it, you can say that it's sort of a computing which you want to perform, but it is actually not the DDBS definition. Okay, any database system which resides at one of the nodes of the network of the computer, that is central. याद रखें कि distributed की एक important बात तो ये है कि कभी भी वो environment तो distributed हो ही नहीं सकती जहाँ पे जो मेरा database है वो एक ही साइड पे रखा हुआ है. तो अगर वो एक ही साइड पे रखा हुआ है तो कभी भी उसको आप distributed तो कह ही नहीं सकते. ठीक है? Rather you can say it centralized database. So we are not talking about centralized databases.
whenever we talk about distributed environment, it means we are talking about decentralized databases. So जिस तरह से हम कहते हैं ना, मैनेजमेंट के अंदर भी होता है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक आदमी होता है, सारे डिसीजन उसके पास होते हैं, जिसका भी कोई प्रॉब्लम होगा, राउट होगे, ट्रैफिक सारी उसके पास आती है। एंड ऑब्वियसली इसमें एडवांटेजेस भी होते हैं और इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो बेहतर सिस्टम क्या होता है, हम कहते हैं कि जी अपनी पावर्स को डेलीगेट कर दो, डिसेंट्रलाइज कर दो, ताकि बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो आपको लेने की जरूरत नहीं है, दूसरे वो डिसीजन ले सकते हैं। सिमिलरली नेटवर्क के अंदर भी अगर हम सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में जाते हैं तो उसके एडवांटेज भी होंगे, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस में डिसएडवांटेजेस इसलिए होते हैं कि जो सारी ट्रैफिक है वो एक ही तरफ को राउट होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशंस, डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम्स, क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम्स ट्रैफिक जो है, जब नेटवर्क ट्रैफिक इंक्रीज करता है और ऑफ कोर्स जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्रीज करती हैं, जब जब ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करती हैं, जब डेटा ग्रो करता है, तो फिर आपके जो सिस्टम्स हैं वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते जिस तरीके से उन्हें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और जितनी भी एंटरप्राइजेज हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो बेहतर से बेहतर सिस्टम जो है उनको इम्प्लीमेंट करें, ताकि उनकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम से कम हो, उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो फास्ट हो, और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी हो, ताकि उनके सारे जो 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 वो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो गेन कर सकें। ठीक है, दिस इज अबाउट so centralized network की, let's say you can see this diagram on the screen as well right now. This diagram represents the centralized model. In this centralized model you can see yourself that for the sake of the purpose of describing the concept, let's suppose that you have the communication networks and various sites are interlinked, and in that picture you can see, let's suppose you have 5 sites, site 1, 2, 3, 4 and 5, but you can see in the diagram that your database actually is residing on site 2 only. So without any doubt this is a centralized DBMS network and it is not the distributed one. ओके यानी ये वो सिस्टम्स हैं जो हम पढ़ के आ रहे हैं, सिंपल क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है जिसमें हमने एक सिंगल सर्वर रखा हुआ है और बाकी सब क्लाइंट्स हैं उससे कनेक्टेड हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट नहीं है। Comparatively, if you see this diagram, you can see that you have 5 sites, but some component of the data residing on site 5, some component of the data residing on site 2, some component of the data similarly residing at site 3. So it means now your data is being distributed on various sites. So it does not mean that site 2 only access the data which is there at site 1, site 2. Sorry, this is not the case. But site 2 can access all the data which is available at site 1, site 5, site 4 and site 3 as well. So accessibility to all data is available to all users, and remember that is transparent as well, because user at site 2 does not have an idea that what is residing at site 2, because they are treating the whole database. तो यूजर्स के पर्सपेक्टिव से तो वो सारा डेटाबेस है, यूजर उसी तरीके से एक्सेस करेगा जैसे वो पहले करता है। यूजर को ये सब डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि साइट 5 पे जाओ, ये उठाओ, और साइट 4 पे जाओ और उसको फिल्टर करो और फिर ये इन्फॉर्मेशन निकाल के लाओ। वो सिंपल एक क्वेरी लिखेगा और जो पीछे बैक एंड पे एल्गोरिथम्स इसके वर्क करेंगे, जो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन अगले लेक्चर्स में, वो उसी तरीके से उस पर काम करेंगे। ठीक है, सो साइट 1, this model which you can see right now on your screen basically describe the distributed DBMS environment. ठीक है, now these are called implicit assumptions. Implicit assumptions क्या होती हैं? Implicit का मतलब क्या होता है? Implicit का मतलब होता है कि जो आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, यानी वो इट्स अ पार्ट ऑफ इट। इम्प्लिसिट assumptions हैं, जैसे आप कंप्यूटर साइंस में अगर आपका एडमिशन हो गया है तो इम्प्लिसिट assumption है कि आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है। इम्प्लिसिट assumption हो सकता है कि आपने इस परसेंटेज से ज्यादा ही परसेंटेज होगी। इम्प्लिसिट assumption है कि आप ये इम्प्लिसिट है ना, मुझे अलग से डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई भी इन्वायरमेंट जो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट होगी तो उसमें कुछ इम्प्लिसिट assumptions हैं। नंबर 1, पहला assumption क्या कहता है? that data stored at a number of sites, each site logically consists of single processor. So हम मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं कि वो जो डेटा है दैट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम एक बात तो क्लियर हो गई, इम्प्लिसिट assumption क्या है
कि डेटा कम से कम 2 या 2 से ज्यादा साइट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक पे तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो हमने पीछे कवर कर दिया कि अगर एक पे है तो फिर वो है ही नहीं. So data stored at number of sites, that is the first implicit assumption. And let's suppose if you are modeling such a system, or if you want to design such a system, then you have to devise yourself that how that data will be distributed. You will come out with various algorithms, and then you basically finalize the architecture that how that data will be distributed. Either at two, अगर दो साइट पे होना है तो वो कौन सी दो साइट्स हैं. Let's suppose अगर नादरा की एक एप्लीकेशन है जो कि पब्लिक सेक्टर का एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, उनका डेटा पूरे पाकिस्तान का है. अब वो ये डिसाइड करेंगे कि जो पूरे पाकिस्तान का डेटा है इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें. क्या कराची का अलग कर लें, बाकी सिंध का अलग कर लें, या कराची बड़े बड़े शहरों का अलग कर लें, या हर सूबे का डिफरेंट हो, या हर डिस्ट्रिक्ट का डिफरेंट हो. दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया. एंड ऑब्वियसली when we will move toward the next chapter, there we will see what criteria which we'll use. But अभी क्राइटेरिया को छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ इतनी बात याद रखते हैं कि implicit assumption क्या है कि that data is stored at a number of sites. Okay, second point is that processors at different sites are interconnected by a computer network, not a multi-processing environment. मैं किसी virtual environment की बात नहीं कर रहा, मैं किसी ऐसी environment की बात नहीं कर रहा where we are using multi-processors. That is totally a different concept. So we are talking about processors yani it means that we have processing abilities at different sites which are connected with the computer network, rather than we are using multi-processing system by using a single system by creating a virtual environment. So that is the implicit assumption. Number 3, distributed database itself is a database, not the collection of files. याद रखिएगा, distributed में हम एक और काम भी कर सकते थे जो computing में हम कर सकते हैं. वो क्या है कि we can have a file sharing system, and then we can write an application program which can process the data available in the files. ठीक है, based on the file merge options or append options and various other options. So remember, distributed database, whenever we talk about this, is a proper database. It is not the collection of files. Data logically related and exhibited in the user access patterns, and for that purpose we need to have a model. So the model which is recommended, or with the model which is commonly used, is called the relational database model. And मेरा ख्याल है जो आपने अपना पहला कोर्स किया है डेटाबेस का, उसमें भी आपने रिलेशनल डेटा मॉडल ही पढ़ा होगा, क्योंकि रिलेशनल डेटा मॉडल हम इसलिए पढ़ते हैं कि रिलेशनल डेटा मॉडल जो है that is considered to be one of the widely used database model while we are implementing database systems. ठीक है, although there are other models as well before relational model and even after relational model. अब तो हम XML databases की बात भी करते हैं, अब हम object oriented database की बात भी करते हैं, हम object relational data model की बात भी करते हैं. तो बहुत सारी advancements आई हैं over a period of time. बट जो कोर मॉडल है, रिलेशन मॉडल से पहले आपने पढ़ा होगा नेटवर्क मॉडल था, हायरार्किकल मॉडल था, फाइल शेयरिंग का मॉडल था. सो वेरियस मॉडल्स हैव बीन इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम considering the data management problems. So the relational data model, which is being proposed by E.F. Codd in early 70s, is still considered to be a very important model while we are developing such systems. Even in this book, उसने जितनी भी डेवलपमेंट आपको दिखाई है, या जितनी एग्जांपल्स हैं, या जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन इस किताब में आप फॉलो करेंगे, वो बेसिकली रिलेशनल डेटा मॉडल ही को बेस करके हैं. Last point is that distributed database management system itself is a full-fledged DBMS. यानी ये नहीं है कि पार्शियल तो है, यानी एक काम तो कर सकता है कि आप इसमें ये काम कर लेंगे, डेटा को व्यू कर लेंगे, आप नहीं, चाहे वो DML ऑपरेशंस हो, चाहे वो DCL ऑपरेशंस हो, चाहे वो DDL ऑपरेशंस हो. DML ऑपरेशंस कौन से होते हैं? We call it data manipulation language. It means that obviously you have to insert the data, you have to update the data, you have to delete the data. All those operations which normally being defined in terms of a query language is of course is a part of it. जितनी भी DCL यानी कंट्रोल के हिसाब से हैं, यूजर की मैनेजमेंट, यूजर को कंट्रोल करना, उनको राइट्स देना, उनसे राइट्स लेना, ये सारी चीजें भी इसमें मौजूद हैं.
इसी तरह से जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको क्रिएट करना, जैसे तुम्हें टेबल को क्रिएट करना है, डेटाबेस को क्रिएट करना है, व्यू को क्रिएट करना है, उनको क्रिएट करना या उनको ड्रॉप करना, ये सारे फंक्शंस भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। क्वेरी लैंग्वेज की इंटीग्रेशन भी इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन भी आप करेंगे, क्वेरी प्लान भी जनरेट करेंगे, सारे वो चीजें जो एक डीबीएमएस के होती हैं वो इसके अंदर भी अवेलेबल होंगी। दैट इज व्हाई वी कॉल इट फुल फ्लेश्ड, यानी इसका मतलब है ऑल दोज फंक्शंस जो हमने पढ़ रखे हैं कि किसी डीबीएमएस में होने चाहिए वो इसमें मौजूद हैं। और ये कोई रिमोट फाइल सिस्टम नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के रिमोटली एक डेटा को एक्सेस कर रहा हूँ और उस डेटा को एक्सेस करके मैं प्रोसेस कर रहा हूँ और फिर मैं उसको कह रहा हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट नहीं कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक ओके, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव? नो क्वेश्चन? अच्छा, तो समझ में आ रहा है जितनी डिस्कशन हमने अभी तक की है? इज दैट क्लियर? यस सर। एक आवाज आ रही है यस सर, बाकी ये अदर पीपल माइट बी स्लीपिंग, अदर स्टूडेंट माइट बी स्लीपिंग। यस सर। जाग रहे हैं, समझ आ रही है सर। तो अगर समझ में आती है तो खतरनाक बात ये होती है कि यू आर नॉट क्वेश्चंस। So while you are there in the class, Yes, sir. after 10 minutes or after 15 minutes, I will give you 2 or 3 minutes. You might ask questions, ठीक है? And of course, your previous knowledge is very important. So if you have problem in your fundamental knowledge, please refer back to your previous book, and you can see that how those fundamentals is आपके लिए कितने जरूरी है। उन फंडामेंटल्स को जानने की आप कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि जब आप एक एडवांस कोर्स में आते हैं तो फिर आपको आसानी से उन फंडामेंटल्स को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अच्छा, इस कोर्स के लिए जो हम किताब यूज कर रहे हैं, बुक यूज कर रहे हैं, दैट बुक इज, अगर आप अपने पास लिख लें, दैट बुक इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स, इसका नाम यही है। और that the authors are Tamer and Ozu, Tamer, Tamer and Ozu, OZHU। टैमर एंड ओजू की किताब है, आप चेक कीजिएगा नेट पे, आपको अवेलेबल होगी। टैमर एंड ओजू की किताब है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, दैट बुक व्हिच आई एम यूजिंग राइट नाउ, ठीक है। So you must go through with the chapters in detail rather than just relying on the lectures. So lectures are not enough. तो कभी भी याद रखें कि अगर हम ये समझ रहे हैं कि हम लेक्चर पढ़ के, थोड़ी सी स्लाइड्स पढ़ के हमको नॉलेज आ जाएगी, नॉलेज ऐसे नहीं आती है। You have to go through, because everything is practical here in this course. Anything which I am discussing right now is all implementable. You just go and implement it. There is no issue. And while you will go into the market, you must have the knowledge of these concepts so that आपकी डेटाबेस के जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होंगे। काफ़ी मार्केट के अंदर ऐसी जॉब्स अवेलेबल होती हैं जहाँ हम डेटाबेस को एनालाइज कर रहे होते हैं, डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे होते हैं। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हम इस कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल नेचर की हैं। ट्राई टू हैव अ गुड नॉलेज ऑन इट। Secondly, again with reference to the previous course, your ability to develop database system, your ability to use database systems such as Oracle or MS SQL Server is also required over here. Your command on SQL and PLSQL as well is also very important and relevant. Why? Because while you are developing an application in distributed environment, you have to write a code and you have to execute the code. You have to write an application. You must know how to query, how to optimize a query. So for that purpose, जो आपकी पर्सनल स्किल्स हैं SQL की और PLSQL की, वो यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं ताकि हम उसको आगे लेके चलें। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को ब्रेक कर रहा हूँ, मैं 10 मिनट का ब्रेक कर रहा हूँ। 10 मिनट के ब्रेक के बाद मैं आपको फिर लिंक रीसेंड करता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके।